अभी मंजिल दूर है रुकना नहीं है। अभी मंजिल दूर है रुकना नहीं है। आएंगी मुश्किलें हजार झुकना नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं दृष्टि गोयल आपका एसएसबी क्रैक टॉक्स पे स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कैंडिडेट के साथ जिनकी मंजिल में मुश्किलें तो बहुत आई लेकिन वे कभी झुके नहीं। हर टाइम उन्होंने खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, इम्प्रूव किया। एवरी टाइम ही वेंट विद फुल जोश एंड फाइनली गॉट रिकमेंडेड in his fifth attempt from 22 SSB Bhopal and is going to join OTA Academy, that is OTA Chennai, very soon. So now let us welcome Mr. Shubham, who has seen all the three phases of SSB, that is being screened out, being conferenced out, and finally getting recommended, and is going to join the Academy for SSC Tech 59 course and listen to his journey. Hi Shubham, how are you? Good, ma'am. What about you? I'm also very good. Many congratulations on you being recommended and getting into merit as well. Thank you so much. Okay, how are you feeling after getting recommended after so many attempts? Like as you have told me, you have been to SSB many times. So how was it finally achieving the dream you were having since so long? First of all, when I got to know about my chess number, that it was chess number 1, so I was shocked and I was not able to believe. It was a moment, and I remember my father, and I started crying also. So I was not able to believe. Then for half an hour, I was in shock and like, it is true. Is it true? Because one of my friend, we both were like, it was his 14th attempt, and he was from civil and he got AIR-2, Prashant, and my was first time. It was my third, fourth conference and fifth attempt. So I was also in the shock state and I was very happy. We were pinching each other's and very happy. And like, it is true. Is it true? Is it true? Then Deputy President Sir came, he congratulated us. And yes, it is. And I called my mother and informed them. They were also shocked and happy and dancing. So it was one of the best moments of my life, I must say. Okay. So it was really great to listen, है ना, कि finally सबको घर में भी ऐसा है कि okay हो गया है अब, है ना? Definitely. Yes. Right. ठीक है, तो अभी आप एक बार मुझे पूरी एसएसबी की जर्नी बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन टू एसएसबी, फॉर व्हिच एंट्री यू वेंट, है ना, कौन से बोर्ड्स में आप गए, एंड फाइनली व्हिच बोर्ड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? Definitely. And my first attempt was for SSC Tech 56 and it was 22 SSB Bhopal. There I went, I did prepare from the YouTube and all, and it was my first attempt, so I got screened out from there. And my major mistake was that it was the OIR part, and there were about 50 questions. And I think the two digits OIRs are much easy as compared to the three digits ones. So in the Okay. first time, it was 168 and 117, the OIR numbers which were mentioned. So the 168 one is bit easy. Those who are repeaters, they know 168, 169. Actually, it is time consuming. I must say it is not hard, but it is time consuming, the reasoning level questions. So I marked the questions in the OIR and but didn't fill it properly. And the last when I started filling then the bell rang and they told us they will give it 23 minutes. But I know it was not 23 minutes. It was on 18, 19. They rang the bell and took my sheet, and it was like totally waste blank. And I was in tension that yeah, my OIR went very bad, and it will not like if in tech entries, if my OIR will be 4 and 5, then that is no use. So I was come into nervousness because of that. My PPT story also went very bad. I was not able to narrate well and did well because somewhere in my that thing was repeating again and again in my mind. And I know the result, so I didn't made it that time. That time I was fresher. After that, my next attempt was in the August. That was Allahabad. So it was 11 SSB and 11 SSB. There I worked on my weakness. How to for that I worked very much for my how to get screening because screening is very tough because that day more number as compared to the fifth day because they see many things in one the first day. So I worked SSBCrack PDF is there of OIR. So 20 sets are there. That is very Right. useful and that time I got this two digits OIR. It is most all the two digits. If you do the SSB crack, then OIR will be from that only. You have to make it practice so that it will take less time. That is one of the best thing about SSB crack OIR. I prepared from there, and I did well in my OIR. After that, a picture was there in which two male were there of age above 60 years, and I made that they were good friends of their IMA
And after they joined, one was a retired army officer because he had the mustache, and another was income tax officer. He went to Dehradun. He was from Dehradun only. And after that, they went to their IM academy. They meet each other. They meet the uh, gentlemen cadets, talked, had lunch, played volleyball, and good things after they return. It was when my fluency went. After writing my story, I continuously start remembering my continuously repeating my in my own whispering like my story, what so that my fluency will be better. And I did well that time. And in GD also I spoke 2 times. And after that, because in the repeaters batch, too much fights and everything, one is beating each other, and even some are like this also. So I was 1 and 2 time I stopped. I was like I'm looking like each other. Yes, yes, he's taking his that, and that's all only. And after that, I got screening, and first time my chest number was 6. Around from 300, only 15 got screening, and my was chest number 6. From there, I got confidence. And there I was experienced what happens in the SS3 because I didn't prepare from anywhere. I only heard, okay, I go through, and I know from the day that I am not getting recommended, but I had the experience, what I have to do and how I have to do. My next attempt was for TGC entry Kapurthala, and it was 31 SSB. And there I prepared well for GTO and psych part and did well also there. But my interview was not prepared to that much level, and I was lacking in my interview only. And there I was because of that was a December month in 2021, and Omicron virus new variant of Corona COVID came, and because of that conference the rooms were waits were open. So before the conference we used to sit in a row like one then we. So I was Right. lucky enough able my discussion went for 30 to 20 to 30 minutes between the SSS. It was straightforward just from the GTO side and psych side, but my interview said no because I was able to heard after the discussion heated argument. My GTO said no, I have seen this quality, no sir, it is good and bad. He said no, no, no. So I was able to listen to all these little bit things. So I came to know that my psych and GTO I did well, and I come to know what I have to do and how I have to do. But So interview said no, so basically you so were lucky at that time to know where you lagged, है ना? बहुत yes, rare है yes. कि किसी को पता चल जाए. Because of Omicron, I must say, Omicron virus, because gates were open and I was sitting close to that gate, and Mm-hmm. I was confident. The whole batch was washed out. Whose batch was washed out there in the Okay. 31st. After that, I took a guidance from a coaching for that interview part because I don't know how what level we have to prepare for interviews. What is the level of international knowledge, national knowledge about the military, and I used to study, but not that much. So from there, coaching from Noida, I learned a lot for the coaching part and gave in mock interviews at the senior of retired officer, entering officer. And I had some of my doubts regarding my personality and some problems. So he cleared that. That your interview will not say no to you. If you do prepare, did well like that. I don't know about your GTO inside. At that time, I get confident. And after that, my next attempt was in Bangalore, 24 SSB. There, my interview went for 2 hours. I know. Two officers, one was the trainee, another was the deputy president of that board. He was sitting side, and trainee was in front of me. First, the trainee took because I think he was checking him how to train a test of like that. So he took 1 hour. After that, he cross question and 1 hour he takes. It was 1 hour, 2 hours both. That interview went well, but there I messed with GTO and psych because I followed some of the advice of the coachings and like that advice was good, but that advice was not matching with my qualities, what I am, the person I am. That advice was not matching with my personality. So I think all three SSs had the different aspects. So like if someone is giving me average, someone is giving me excellent, so they don't take it out. And I came to know like because of these things, because I am not that type of person. I did in that way in GTO and write that type of stories in the psych part. So I came to know that my there was a confusion between the SSR, like he is not that time. So I was dropout. I even discussed also at Bangalore. So my next attempt was for Bhopal. It was now I'm 3 times conference out and very disheartened. Like my next attempt for SSC Tech 59 for Bhopal again 22 from where my journey started. Because like there is a system now like once you like every student they got different boards. So again Right. it was my fifth attempt and fourth conference Bhopal 22 SSB only, and I went there
The story was I am not able to remember. Yeah, one boy is standing and one girl sitting here. So I made them brother and sister, and that boy was studying in a Navodaya Vidyalaya. He went to his home and they cleaned because some cleaning part was going on of painting. So he cleaned the house, helped his sisters. They went to the market, bought sweets, and simple story, and enjoyed Diwali with him, and then returned to his home. It was a simple story. After that, OIR also simple, no problem I had, and discussion and all. It was good. And I got screened in, and my chess number was 171, and I got chess number one directly. I don't know how come it is. I don't know why. And I had the group of freshers and screen outs, and two more repeaters were there. They having chess number I think 9 or 10, and I was one. That's between all were screen outs and freshers. After that, psych for next day, psych was there. In the psych, I did well. I did stories related to my life, the things I did in picture related. I had many. I was very active in extracurricular things in my life, like yoga, cycling, yoga international yoga programs, district yoga programs, scout and guide, and governor awarded. So I used to do a lot of traveling and adventure camps and many things in my life. So a picture I used to imagine myself, and I used to write stories related to what I did in my life. And VAT, I used to attempt all VATs in all my attempts except first one. After that, I attempt all VATs. It was easy related to things related to my personality. I used to answer VAT, not a high level, low level. I didn't add any scheme and anything in my even psych part also. Simple stories related to my life. And SRTs, I did only 32. 32 well-defined SRTs because at Bhopal, the questions of SRTs were a bit long. So I did, Okay. I considered quality over quantity. So, and I did 32 SRTs in a long way, and then the sir said only 5 minutes left. I was able to do five more, but in a short way. So 37, I must say, but those five, I don't think of that much good level, but I did 32 by the proper way. And after that, in that day only, I had my interview because being a chess number one. And Commandant of Bhopal, Major General Sir took my interview. He took interviews of four from 1, 2, 3, and 4 chess number. And it was my interview was one of the best interview I must say of my any SSC attempts. It went for 2.5 hours, and he was a very good and down to earth person. He asked about from how you are coming, where are you coming, any famous about Bikaner. He was started like that, and something in between. He's talked about when he gets what were the attempts. Manika sir is trying, and maybe this time if I'm lucky, and this time I will able to. So he said, "Do you believe in luck? Not in hard work." Manika sir, I believe in hard work, but 80% is hard work, but 20% is luck also. And I said, "Sir, what type of SSRs we are getting? That also plays important." And then he started laughing, and I was a cheerful person. I used to always smile in a simple way, sitting, and it was a pause good, and it was went like they all he PIQ asked. He asked some of the technical questions after it about army, and he asked muses. So okay, let's stop on a topic. He didn't I say most of the interviews every time tell me about five national, five international. He didn't say, "Oh, let's talk on a topic. Which topic you want to discuss?" Man, sir, president elections. So president elections, he start okay about what a lot of houses and about the US and all. I had the little bit knowledge. I explained it that on this much only. I thought, okay. Then he asked me about tell me about the presidents from 1 to 15 in a sequence order. So I prepared well. I know. I tell him. Then he came to prime ministers. I explained that also. And then about the generals of that which regiment and answer infantry I want. Why? Because my father was Sainik School Chittorian. So I met Dalveer Singh Sohag. That time he was Lieutenant General. So he was from Gorkha. He was basically inspiration for the. So he asked me, okay, tell me about the generals of Gorkha regiment. So I said that. So after that, he came out the PIQ and all things. This is how I don't come to it when 2.5 hours is over. And he was like father to me. I must say, he was with all only, but he was very good and doubtful person. I must say, I was honest and straightforward. I think that thing he liked me the most. After that, in my GTO, GD, I was able to do good in GP also. And PGT, the GTO is not difficult for me because I am good in, I as told you in my scout point, these only the knots and all these are the parts camping. We know how to, so it was easy for me. Even in my GTO, none of the person called me for the command task. I don't know why, because it is that if you do well in GD and GP, na PGT, so they used to get jealous. Although they were very good in lines and no problem,
none of my called me for the remand task because they thought he will get he is getting recommendation already. So why I don't know their friendship, and I never used to say to anybody, "Bhai, tu mujhe bulayega, मैं तुझे बुलाऊंगा." I never used to say because I don't find this good. So or that thing, even GTO sir also came to know about these things. So I was for a while I was my command was not command task in hand that time. I was the last second or third. So I was यार GTO से क्या सोचेंगे कि ये मतलब फ्रेंडली नहीं है या कैसे इसको किसी ने बुलाया ये वो. So all myths में मेरा command task start हुआ. It was he changes some of the color and एक tire बंधा हुआ था tree से. You have to take swing from the tires from reach. And GTO sir told me कि you only have to do. None of your subordinates will anything. I did it in a while and no problem I got. After that, this is how I completed. Then for the conference started from the last, from 30. Okay. So from reverse order it was started, and my was one I have to wait for the last one. I was just number one. I waited for 5 to 6, 7 minutes. Then they called me. Then Deputy President sir, because the President sir took my interview, then Deputy President talked with me in the conference. Then he asked, okay, tell me about your qualities and all. I explained. Then he started asking me technical questions. Some of the technical question I was able to answer, then some I didn't. Then he said, try. Why don't you know? And I said, I prepared, but I don't, but there's not limit of knowledge. I'm working also, so I don't want that much time. So then also try. And I said, sorry, I don't want to because I don't want to lie or bluff. And I was in a attitude because I was very frustrated. They are not going to take me. हर बार yes sir करता हूँ and he was on my पूरा attitude में. I said, sorry, I don't know, I don't want that. And my commandant sir, JJ General sir was laughing and smiling on his face like giving me vibes like I have selected you, let him speak whatever. Because conference also carries marks. There's something they have to talk with you to give you marks in the conferences also. All my GTOs were smiling because I think in the discussion maybe sir has said something about me and anything. So all were having good faces, and this is how my conference complete for 7 8 minutes. It was then I went home. Then the results came and it was because in my group 30 got screened, 3 were already previous recommended. So I was not hoping because Sachin only two only has made it. So I was okay, let's make a ticket again. I'm not making it. It was in my side. So is there any guesses? Then most of the students were taking the test numbers of the recommended one only. One of test number 4 took my name, test number 1. Said, what, one? Yes, one, you had made it. And it was, I was shocked and my life changed, everything. And I was not able to believe what has happened because Bhopal is very hard. Only six, around from 15 to 16 batches of SSC Tech, only six had been selected for this entry. Only six. Other batches are wash out, wash out, wash out. And it is, I know, so Bhopal is very strict. So I was not able to believe. Then this is how my medical started and my life got changed. Okay, so you have covered entire journey very beautifully, है ना? So I was also asking you about the favorite board. So कौन सा board आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? Actually, every board has different some qualities and some ideas. Like Bhopal is one of the beautiful board, I must say. Food also it is that. And before Bhopal, I used to say to everyone, Bhopal सबसे बेकार board है. बेकार मैं क्यों? Because I got screened from there. I was not knowing that, and I told to commandant sir also. He asked me about the journey. And I said, sir, I had been to all three boards, conference on from there, and this is last. From there, I will get recommended. And when I will be in the job, then I will have so many things to talk with my seniors about my journey. About I have the knowledge of all the boards. Like so things we are to, he was started laughing at yeah, good. So, okay, from here you got recommended. Okay, yes, sir. So and Allahabad is also a good port, but as compared to food, Bhopal is much better, and scenery Bhopal is beautiful, and Kapurthala is also good. Bangalore, I must say, first I would rate best for according to me, it was Bhopal, then Kapurthala, and then Allahabad, and then last I would rate Bangalore. Bangalore. Okay. Yeah. So now as you were screened out in your first attempt, but after that you prepared so well that you have never got screened out. So can you tell about those tips and tricks which you followed might be working for other candidates as well, if you can? Yes, definitely. I must say to all that, please, first thing, dress very well because that is your first impression. Okay, like I had two times, like in June, Bhopal, at one time it was I had a week in this September. I had previous year. So that time I must say I used to wear a blazer. That was a winter blazer, Raymond. That is not hot. But before I entering to an assessment of PPDT, I used to wear, and after completing it, I used to change.
So everyone, other students used to make fun of it. हाँ इसने तो blazer पहना है, इसको तो लेंगे ही लेंगे, और making that doesn't bother me. Let them speak. And when the screen out results used to come, then I used to answer, yeah, देख blazer से हो गया भाई. So that I mean to say that it's not blazer. Whatever you wear, but it should be in a proper and good way that you should know in front of whom you are going, until which Right. service you are going, and if you are wearing, some are wearing jeans and lowers, and some are having body t-shirts, so it doesn't look good. So please dress very well in a decent manner. That is one of the first thing. Then your OIR must be very well. I must say, you should prepare OIR in written, that you should attend all the questions and it should be correct. Your OIR must be, according to me, 1 and 2. You should prepare very well for OIR. And SSBCrack OIR is one of the best, I must say, because I have prepared from there only. Third thing, make a simple story, very simple and normal, your day-to-day life stories. No make any hi-fi scheme, और आप हर किसी को IAS बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, साइंटिस्ट बना रहे हो, जो आपने कभी चीजें करी भी नहीं है, तो एक फेक लगती है, ऐसा लगता है, और आप घर से बना के आ रहे हो, और जो पिक्चर देख रहे हैं, मेक स्टोरीज रिलेटेड टू दैट ओनली. बिकॉज कई तो एकदम ही अलग इरेलीवेंट बनाते हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं होता, कोई ऐसे घबराने की. जो भी पिक्चर आ रही है, आप अपने लाइफ से कोई 4 जने दिख रहे हैं, तो उनको गेट टुगेदर बना दो फ्रेंड्स का, फिर क्या क्या करते हो वही लिखना है, जो करते हो, कुछ बनाना नहीं है, दो एक नेचुरल स्टोरी होगी. और जब आप उसको जैसे आपने लिख दिया, लेट स्टार्ट रिपीटिंग इन योर इनसाइड, सो दैट इन while you narrate, it must fluency came very good. So 100 times, how many much time, until unless your chances came, don't talk with anyone, try to murmur and repeat, so that while you will narrate, look at everyone, don't look at SSers at any time, and narrate your friends like your neck should be like this, and in a very good and positive and confident pitch it must be, so that everyone gains your attention. If your narration will be good while you give your point in GD, that time also they will listen, because you can show, you can represent your confidence that time. After that, in GD, I used to give point in 1 to 2 times only. Rest time I do to listen, because in a fish market I don't like to speak much, and it is not duty to make a use shirt to let him speak, give him chance. Yes, it is not our duty, it's their duty. Na, you should do your job for in take the group forward. Okay, ये हो गया, अब आगे ये 4 कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर थे, इसी पे मत पड़े रहो, पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रुप को आगे ले जाने की कोशिश करो. दैट विल बी मोर फर्दर, कि आप ग्रुप पर्सन, आप टीम को आगे ले जा रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत लेस रहता है. इसी पे रह जाओगे 4 2 कैरेक्टर, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है. 2 3 बारी बोले, नेक्स्ट टाइम अदर को भी चांस दो बोलने का, उनको सुनो. सो दिस इज हाउ इफ यू डू इन अ पॉजिटिव एंड आपकी बॉडी गेस्चर, ठीक है, आप ज्यादा हाथ मुंह नहीं ला रहे हो वाइल नरेटिंग, प्रिपेयर, बिकॉज मैं उसको प्रैक्टिस करता था. सो इट इज बेस्ट थिंग. और मैंने कभी ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाए फ्रेंड्स के और जीडी में प्रिपेयर किया, कभी नहीं किया, बिकॉज कभी इतने मेरे फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड्स तो इतने नहीं है कि हम बना सकें ग्रुप. और so if you will do, तो आपका कभी आप स्क्रीन आउट हो गए ही नहीं. Try this thing and you will 100% get screen in. This is how. So basically you followed or you worked towards your story writing and your narration more than the GD Yes, part. yes, Right. yes. GD I must say कि I'm important give more to. I contributed, but not like repeat talking again and again and again. OIR, then write story and narration. ओके. जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि आफ्टर स्टोरी राइटिंग, है ना, जीडी से पहले उनको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम मिलेगा, तो आपको क्या लगता है अप्रोक्सीमेट कितना टाइम रहना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स तो इजीली हर किसी को मिलते हैं, जो फर्स्ट बैच जा रहा है उसको भी मिलेंगे. एंड 10 मिनट्स आर फार फार गारंटी टू रिपीट योर स्टोरी फॉर 50 60 टाइम्स, 70 टाइम्स. आप बातें मत करो ना फालतू बकवास, बिकॉज एट टाइम टाइम नेगेटिविटी चलती रहती है कि यार टिकट वापस करा ली तूने तूने करा ली. डोंट लिसन टू योर नेगेटिविटी एंड बी कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस. एक बार ही हो जाए, देन डू वट एवर यू वांट टू डू ना. बिकॉज हम मस्ती कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, जो भी होगा सीरियस, तो आप अपनी उस पे स्टोरी पे करोगे तो आपकी नरेशन बहुत अच्छी आएगी. आप कहीं रुकोगे नहीं, अच्छी फ्लुएंसी निकलेगी, और बोलोगे तो समझ भी पाएंगे वो. अगर नहीं करोगे तो एकदम हाँ सोच सोच के बोलोगे तो रुकोगे, अपने आप पता चलेगा कि आप अगर आप कॉन्फिडेंट देन ऑल्सो कॉन्फिडेंस विल बी नॉट बी श्योर. So it is better to continuously repeat in your mind and inside you, whispering like now mask, when I used to mask, so no one comes to know also. So it will give good performance by narration. राइट. ओके, अभी आई विल टॉक अबाउट योर स्टेज 2, है ना. सो स्टेज 2 में एज यू सेड योर साइक एंड जीटीए वाज योर स्ट्रॉन्गर एरियाज, राइट? Yes, तो yes, yes. साइक के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करी? क्योंकि इनिशियली बीइंग अ फ्रेशर एवरीबॉडी इज वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट साइक, कि यार कैसे करेंगे, 2 घंटे का टेस्ट है, कौन लिखेगा, कैसे स्टोरी बनाई जाए. सो इनिशियली वर यू एबल टू लाइक प्रैक्टिस द एंटायर सेट्स और यू वर गोइंग पार्ट बाय पार्ट while practicing?
actually when I got screened out na, before that I used to prepare for cycle or tat and all, and but then I came to know it is of no use that if I you prepare it, though your psych will be getting damaged day by day if you practice more. It is that Right. yes, work on your speed, but Mm-hmm. not changing each and everything. Once you got the idea how you have to start the story, like if any story is there or whatever is the story is there, make your related to your personality. Your it has you mention the name, age in the tag, then the schooling or the from where what study, the engineering student from government engineering college, then start what let the story what is going on in the story. In the final also explain what happened that he is coming from college and accident game. Then after sorting it out, he will return back to his college also. If you know the writing pattern, then in every story you have to repeat that thing only, and it should be related to your life and your personality, not any scheme आप डाल रहे हो जो आपने चीजें करी भी नहीं है, हर किसी को आईएएस बना रहे हो और मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाई लेवल की बना रहे हो, but you are not of the things did anything in your PI की आपने कभी करी भी नहीं. So according to me, I am not no one. I don't like to give any because being every personality is different. So I will Mm-hmm. not say ऐसे करने से ऐसा होगा. It is my what I believe and I got the thing. And VAT कभी भी VAT छोड़ो मत. Please attempt all the VATs. चाहे सिंपल बनाओ वर्ड्स या हाई लेवल के बनाओ, बट नेवर लीड एनी बैट. एंड एसआरटीज पे क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो देन दी क्वांटिटी की हमें 60 करनी है 55 करनी है, कोई यूज नहीं है अगर क्वांटिटी नहीं है. बिकॉज इन माई कॉन्फ्रेंस ऑफ रिकमेंडेशन no SRTs were asked at all. No SRTs were asked because my psych was clear from their side. It was 32 then also it was clear. And SD पे जितना हो सके पूरा भर दो उसको जितना, because you should know. ऐसा नहीं अपने थोड़ा 4 लाइन आप अपने बारे में ही नहीं जानते क्या तो आप क्या मतलब करोगे, तो अपने बारे में जितना आई यूज्ड टू फिल ऑल द 3 पेजेस फुल. आपने जैसे लाइनिंग करी जैसे 5 पोर्शन होते थे, फुल ऑल द पोर्शन, नथिंग यूज्ड टू बी लेफ्ट. So fill all the SDs in your own natural way. What you are, cool, optimistic and disciplined. मैं तो कभी नहीं लिखा punctual and all thing. Whatever in my real life qualities, I used to write in that only. कभी ऐसे मैंने फालतू high five words नहीं लिखे. What I am not. So it is because आपकी SD आपके इंटरव्यू के हाथ में होती है, तो Right. पूछता जरूर है. तो जब आप उनसे बात कर रहे हो और आपकी जो SD की पर्सनैलिटी है तो मैच करने में पता चल जाता है कि ये ऑनेस्ट है, फिर आप कोई आंसर देते हो तो उसको काउंटर भी नहीं करते. यस ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन. बट आप एसडी में लिख रहे हो अलग और आप फेस टू फेस पे हो रहे हो अलग, तो डेफिनेटली वो आप पे क्यों बिलीव करे. सो दैट प्लेज इन, तो आपके एसडी ऑनेस्ट लिखो और ऐसे लिखो कि आप ऐसे ही जो लिख रहे हो वही आप हो. सो दैट इज माई एडवाइस फॉर द साइक पार्ट. So how did you prepared for SGT? अभी क्या है कि काफी जो अपने फ्रेशर्स हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इनिशियली जब वो एसजीटी लिखने जाते हैं. सो शुड दे आस्क एक्चुअली फ्रॉम देयर पेरेंट्स टीचर्स एंड एवरीबॉडी या फिर खुद से लिखना चाहिए? हाँ आई डोंट थिंक इट, मैंने तो मेरे पेरेंट्स टीचर से नहीं पता, बिकॉज आप स्कूलिंग में होते हो, आप इतनी चीजें करते हो तो आपको पता ही होता है कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने क्या क्या आज तक चीजें करी हैं, आपने क्या क्वालिटीज थी. इवन पेरेंट्स से भी आपको पता ही होता है. आपको अपने बारे में ही नहीं पता होगा तो आई डोंट थिंक सो कि भाई पेरेंट्स, सबका अपना अपना भी होता है. कई कहते हैं हमने पूछा दोस्तों से और ये सब, बिकॉज वी नो व्हाट दे थिंक, दे ऑल्सो शेयर ऑल्सो कि शुभम तेरे में ये चीज अच्छी है, तेरे में ये चीज सही नहीं है, तू इन चीजों में बहुत अच्छा है, इस चीज को वर्क करना चाहिए. वही चीज आपको लिखनी है. टू बी ऑनेस्ट हम्म. नेगेटिव तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ लिटल भी चीज है वो लिख दो, बाकी ऐसी कोई नेगेटिव चीजें मत करो कि जो आपकी चीज मतलब सिलेक्शन में रुकावट करे. तो बी ऑनेस्ट ऑलवेज, बट इन स्मार्ट इनफ कि वो आपकी रिकमेंडेशन में ना प्रॉब्लम डाले. रहो ऑनेस्ट, बस झूठ कुछ मत बोलो, बल्कि आप उसको छुपा लो चीज को, बस झूठ कुछ मत बोलो. इन दैट वे मैंने कभी नहीं पूछा, आई नो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं. आई वॉज एबल टू राइट एवरीथिंग. आई नेवर आस्क माई फ्रेंड्स एंड मदर एंड एवरीथिंग बिकॉज आई नो what is there and what is not. So I practice. Alright. I wrote, and I used to. For this thing is little bit left. I used to add 2 3 times. Then I come to this happening. And every time I stare, I never used to prepare. And every time I need to prepare for psych. Directly I used to go for SSC. For psych part. For interview I used to learn a lot of things, but not for G2 and psych. ओके. सो एक और मिथ है ना, जनरली पीपल बिलीव दैट इन एवरी पैराग्राफ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट नेगेटिव्स एज वेल, कि ओपिनियन आप लिख रहे हो तो आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिख सकते हो. सो Yes, व्हाट yes. डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट थिंक कि आपको से नेगेटिव इतना लिख देना चाहिए फालतू अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए. अगर कुछ नेगेटिव है ही नहीं इतना तो आप क्यों लिख रहे हो. कुछ ऐसे नॉर्मल चीज है जैसे कि मैं जैसे कि आई डोंट नो दिस इज नेगेटिव नॉट, आई एम एन एनिमल लवर. तो जब मैं एनिमल्स से ज्यादा टच और प्यार करता हूँ तो माय मदर यूज्ड टू स्कोल्ड मी कि भाई तू वहां क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे जर्म्स हो जाएंगे. शी यूज्ड टू गेट अफ्रेड कि बीमार ना हो जाओ.
तो ये कि मैं लिखता था कि ये चीज मैं मेरे की नहीं सुनता था, बट मैं उनको फिर मना लेता था। अगर आप कुछ नेगेटिव लिख रहे हो तो आप उसको कर कैसे रहे हो सही, वो भी जरूर लिखो। That राइट। also plays important. So मैं I used to write कि I used to wash my hand with Dettol. I used to convince कि देखो ना मैं proper हूँ, कुछ नहीं होगा ऐसे. So I used to get convinced. और कुछ भी ऐसी चीज है आपके फ्रेंड से रिलेटेड, like I have habit of with hands I used to let their bags, I used to beat them like any more joke and say. So ये they used to get annoyed at that thing. But then I used to hug them and used to convince them. So if you have any negative thing according to you, so you used to write how you are improving that thing. उसको आप सही कैसे कर लेते हो या कैसे कर रहे हो वो भी लिखो, सिर्फ ऐसे लिखकर मत छोड़ दो नेगेटिव। सो दैट इज, आई डोंट थिंक नेगेटिव लिखना जरूरी है। पॉजिटिव लिखो, क्यों अपना नेगेटिव आपको पार्ट बताना है, पॉजिटिव भी बहुत कुछ होता है कि उसके बाद स्पेस ही नहीं रहे। राइट। ओके, सो फिर टॉक अबाउट सजेशन, ये आपका जो पीआई की फॉर्म है ना, सो पीआई की फॉर्म के लिए आप क्या सजेशंस देने चाहोगे? बिकॉज अगेन फ्रेशर तो पहली बार देख रहे हैं कि पीआई की फॉर्म नाम की कोई चीज भी है ना, एंड इफ somebody is not prepared on the spot to completely write everything in the पीआई की फॉर्म is a little bit challenging, है ना। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी थी पीआईक्यू को लेके, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ पीआईक्यू इन द रिकमेंडेशन? PIQ plays a very important role, to be honest. फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम PIQ हमेशा नीट एंड क्लीन भरना चाहिए, और एक्सेप्ट योर नेम दैट मस्ट बी ब्लॉक, एवरीथिंग मस्ट बी इन अ रनिंग हैंड राइटिंग। सभी ब्लॉक में नहीं भरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग से, एवरीवन इज डिफरेंट। और व्हाट आई यूज्ड टू डू आफ्टर माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट, I took a PRQ from internet and filled that, and only those in before only. So while we have that documents book, I used to kept in that, and there I used to copy from that. Because क्या होता है वहां पर फिर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख दोगे या कुछ नहीं लिखोगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप फंसोगे, यार आपने झूठ लिखा है। तो वही चीज लिखो जो आपने लाइफ में करी है, और अच्छी हैंड राइटिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स जो भी है, फेक मत कुछ भी लिखो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर चीज आपसे उससे रिलेटेड पूछी जाएगी। लाइक मैंने स्काउट गाइड में किया हुआ है, तो जो कमांडेंट सर थे, मेजर जनरल सर, उनको इतनी नॉलेज थी स्काउट गाइड की, जैसे कि उन्होंने लाइफ में खुद ने किया हुआ, उस सैल्यूट होता है हमारे लाइक दिस, तो इन थ्री राइट। फिंगर्स का क्या मतलब होता है, दैट स्कार्फ का क्या मतलब होता है, वॉगल का क्या मतलब होता है, उसकी ओथ क्या है, बहुत चीज उनको पता थी, बहुत चीज उनको पता थी, बहुत चीज आई वॉज एबल टू से सर ये कैसे होता है, इसके अंदर स्टेजेस कैसे होती है, गवर्नर अवार्ड देन प्रेसिडेंट अवार्ड। सो इट वाज मैन मेरे क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दैट आल्सो। सो कोई भी ऐसी झूठी एक्टिविटीज एडवेंचर स्पोर्ट्स तो कौन कौन से मैंने किए, मैंने रैपलिंग बताया तो उन्होंने रैपलिंग का पूछा, सर रैपलिंग कैसे होती है, नीज बैंड होते हैं, मैंने कहा नहीं सर नीज बैंड। तो बहुत से क्वेश्चन उन्होंने मेरे जो मैंने एडवेंचर स्किप्स किए, मैंने बंजी जंपिंग का बताया तो उन्होंने पूछा अच्छा वो रोप कौन सी यूज होती है, वो रोप का उन्होंने पूछा, आई वाज एबल टू आंसर। ओके, जैसे कि और लाइक साइकिलिंग का बताया तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे। योगा से पूछा तो अच्छा योगा में क्या क्या करते हो, मैंने कहा सूर्य नमस्कार से कितने कर लेते हो, मैंने कहा सर 100। तो कहते कर लेते हैं, यस सर। क्या तो उससे क्या होता है, मैंने कहा सर स्टेमिना बूस्ट होता है, और रनिंग इफ यू आर रनिंग फॉर 5 किलोमीटर एंड डूइंग 10 सूर्य नमस्कार 12 इट इज इक्वलेंट। सो कहते हैं गुड। सो कहते हैं अच्छा। तो बहुत से उन्होंने योगा के प्राणायाम का मतलब, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग ना, बुक्स इफ आई रीड रीडिंग, तो मैंने लिखा सर मेरे को स्टोरीज बुक्स पढ़ना पसंद है और न्यूज़पेपर। सो उन्होंने उस बुक से पूछा मास्टर्स की, जैसे कि आई वाज फ्री सो आई डिड एमए, प्राइवेट एमए इंग्लिश लिटरेचर आल्सो बिकॉज आई लव रीडिंग so stories. So I did take a degree also for that and did completed my masters also. So I okay का क्या subjects थे आपके masters में, कौन कौन सी books थी, so I named all the book, क्या even for a one the vindication of women's rights. So sir, I think sir had also read that books and he asked me what was the story, what is there in that. So जो भी आप बोल रहे हो प्लीज बी ऑनेस्ट, आपके PIQ में जो लिख रहे हो क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे, और फ्रेशर तो स्पेशली आपका तो सारा ही CIQ बेस्ड होता है, रिपीटर से तो फिर भी इतने CIQs नहीं पूछे जाते, बट फ्रेशर्स के पास तो इतने टाइम ही नहीं होता है कि उनसे टेक्निकल या जीके और चीज पूछेंगे, क्योंकि उसी में उनका टाइम हो जाता है CIQ। तो आपका तो सारा PIQ बेस्ड है। सो वट एवर यू राइट प्लीज राइट बी ऑनेस्ट इन दैट थिंग, और हर चीज की, और जो आप लिख रहे हो तो उसकी हर चीज, हर जो स्पोर्ट्स है उसकी मेजरमेंट्स ग्राउंड्स रनिंग पूरी लर्न करके जाओ। सो इट विल बी वेरी गुड, गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन अगर आप उसके बारे में पूरा जान के जाओ, वही चीज फील करो। और मैं ये कहूंगा कि घर से एक रफ PIQ भर के ले जाओ, जो सो आप एज इट इज उसमें कॉपी कर लो, ताकि ना आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखो वहां पर और ना कुछ कम लिखो, तो एकदम सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। मैं हमेशा वो फॉलो करता था, और हर नेक्स्ट अटेम्प्ट होता था तो उसमें नेक्स्ट से वो भी कर लेता था, नाइट जो भी होता था ना अटेम्प्ट। तो वन ऑफ द राइट। बेस्ट थिंग आई मस्ट से, और PIQ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड। ओके, सो वेरी वेल कवर्ड एक्चुअली, है ना, क्योंकि पीआईक्यू हमें पता है कि हमारे सारे एसएसएस मोस्टली आर चेकिंग आवर पीआईक्यू फॉर्म, है ना, यस तो यस, दैट शुड बी फिल्ड वेरी केयरफुली। इवन राइट नाउ साइकोलॉजिस्ट।
Yes, yes, ma'am. In psychologists have, interim officer had, and Allahabad, I think they used to get filled 3 PIQs. Don't know GTOs also had or not. Some SSB only 2, and there some SSB they have 3, have to fill 3 PIQs. So they all have SSS and PIQs जैसे एक जन्म कुंडली आपकी ना, Yeah. because before entering in the interviewing officer rooms और साइड से तो मिले भी नहीं होते, तो हमारी पूरी इमेज बना देता है कि हम कैसे इंसान हैं, क्या हमने जिंदगी में चीजें करी हैं क्या नहीं करी. So it is very important for all. Okay, अच्छा. If I'll talk about your interview part है ना, it was very shocking और surprising for me to know कि आपका first interview गया बैंगलोर में 2 घंटे और फिर आपका भोपाल में गया 2.5 घंटे, है ना. So what was this, इतने लंबे इंटरव्यू क्यों जा रहे थे आपके? रीजन थिंग एक्चुअली जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स और है ना, वो बहुत ज्यादा हैं और थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू, तो उनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं. Can you name और some of them? लाइक आई मस्ट से दैट स्काउट एंड गाइड्स है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेरी एनजीओ है एनिमल्स की, तो उससे ज्यादा बन जाते हैं. फिर योगा के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स और मैं करता हूँ, जितने भी हमारे बीकानेर के अंदर आईएएस आईपीएस से रिलेटेड, तो उससे भी हैं. और जो बेसिक्स कबड्डी हो गए या जो भी हमारे यहाँ पे बेसिक्स गेम्स हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं. और जैसे कि जो भी इवेंट्स यूज टू कंडक्ट, जैसे डांस का प्रोग्राम है तो नॉर्मल है डांस इवेंट तो, बट डैड फिर वो उनकी डेप्थ में जाते हैं, बहुत चीजें पूछते हैं. और बीइंग लाइक माय फैमिली से रिलेटेड, बहुत मेरे फादर नहीं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे कर रहा हूँ पूरी, तो उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाउ आई यूज टू स्टे विद माय मदर सिस्टर्स, कैसे मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, कौन सी सिस्टर से मैं क्या शेयर करता हूँ. बिकॉज आई हैव 5 elder sisters, आई एम यंगेस्ट अमंग ऑल. So these are very big family and about my academics, everything about my teachers. So इसी रीजन से आई थिंक पीआईक्यू का इतना होता था कि वो पूछते थे. फिर उसके बाद टेक्निकल पार्ट्स पूछे जाते हैं, फिर आप वो जीके पार्ट्स पे आते हैं, उसमें वो बहुत चीजें पूछते हैं. इस रीजन से आई थिंक वो उनको अगर इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज जो मेरे प्रीवियस जो अटेम्प्ट थे कॉन्फ्रेंस उसमें मेरे कभी नहीं चले 30 मिनट्स और 35 मिनट्स ऐसे चले, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पा रहा हूँ. तो दे आर Right. ऑल्सो इंटरेस्टेड ना, दे नो कि ये तो झूठ बोल रहा है, झूठा लिखा. So why they, if I am giving able to answers, that is why वो आगे जाया जा रहा है, वो उनका भी इंटरेस्ट बना रहा है. क्योंकि आपको ऑलवेज इंटरव्यू का इंटरेस्ट आपके अंदर बना के रखना है, तभी वो इंटरेस्टेड होगा ना, आपके आगे तरफ रिकमेंडेशन के लिए जाएगा आपके मार्क्स पर. अगर उनको आपको पसंद ही नहीं आगे तो वो अपने आप चाहेंगे कि आप फटाफट निकल जाओ, और कुछ इतना ज्यादा नहीं है पूछने के लिए. बिकॉज इंटरव्यू ऑल्सो ट्राई ना कि जो हर चीज को वो वेरीफाई करते हैं कि जो जो आपने लिखा है Right. वो ऑनेस्ट है या नहीं. सो द मोर यू विल स्पीक एंड द मोर यू हैव टू आंसर टू नो ऑन अ डेप्थ. एंड और इट इज दैट जितना जो जो आप बोल रहे हो उससे फिर डायरेक्शन क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो उसको और वेरीफाई करते हैं अगेन. So because of that, I think and Bhopal wale to sir was very happy. He was behaving like that was one of the best major general sir. He was behaving like my father sitting on me and was very good and he smiling me, and I was also in many moments and we both were. So it was very, but I was in a limit because I know how I have to behave. But he was very good and down to earth person, I must say. Okay. So can you tell me what major preparations or which sections should be touched before going for interview? जैसे आपने बताया कि अभी जीके है, टेक्निकल है, तो जीके में क्या पार्ट प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर टेक्निकल के लिए पर्टिकुलरली बहुत लोगों को डाउट है कि टेक्निकली कितना डीप में वो पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चंस. सो एज यू हैव बीन टू फेयरली गुड नंबर ऑफ टाइम्स टू एसएसबी, सो यू विल बी गुड पर्सन टू सजेस्ट दिस कि कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए. Yes, actually, if you are precious now, then I don't think कि आपसे टेक्निकल इतना पूछा भी जाएगा, क्योंकि आपके CIQs इतने हो जाएंगे और आपसे जीके का इतना पार्ट पूछा जाएगा. बट इफ यू आर रिपीटर, देन आपसे जीके से रिलेटेड बहुत पूछा जाएगा. और टेक्निकल के अंदर ऐसा होता है कि जैसे भी अगर आप किसी टेक्निकल एंट्रीज में जा रहे हो, तो आप जो भी आप बोलोगे आपको कौन सी रेजिमेंट में जाना है, तो वो क्या यूज क्या करती है, मतलब वो क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं. तो आप जो भी ब्रांच है आपकी ब्रांच से रेलेवेंट बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई ऐसे हाई फाई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. अगर आप उन बेसिक्स चार चार पांच क्वेश्चंस को आंसर दे रहे हो बस दैट इज इनफ. सो कोई ऐसे हाई लेवल, बस एकदम बेसिक्स पर आपको बेसिक भी पूरे पता होने चाहिए कि आप ऐसे ब्लफ नहीं कर रहे हो बेसिक्स के आंसर्स है. तो वो बेसिक क्वेश्चन है. और अगर आप सीडीएस एंट्रीज और से जा रहे हो तो उनसे पूछा जाता है, जैसे कि मेरे से नहीं पूछा गया बट वन ऑफ माय फ्रेंड बहुत से फ्रेंड्स पूछा गया कि अच्छा आप आए हो यहाँ से अमेरिका का सी रूट एयर लोन रूट लैंड रूट बताओ. सो उनसे जीके से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, इट इज दैट. और जीके पार्ट में ऐसा होता है जैसे कि जब वो पूछते हैं आपसे न्यूज़ेस, तो आप 5 न्यूज बता रहे हो, 5 नेशनल 5 इंटरनेशनल, कोई भी न्यूज बता रहे हो फॉर एग्जाम्पल है ना, उसमें कोई कंट्रीज का नाम आ रहा है फॉर एग्जाम्पल राइट. रिलेटेड. मैंने प्रेसिडेंट इलेक्शन बोला तो मेरे से प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा गया. कोई कंट्रीज का नाम आ रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान का आ रहा है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है ना,
तो अब वो पूछ लेंगे, अच्छा टेल मी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अर्मेनिया एंड अजरबैजान। वो बैंगलोर में मुझसे पूछा भी गया था, देन आई रेड दैट थिंग एंड आई नो सर इट वाज रिलेटेड टू नागोरम काराकोरम हिल्स एंड सो आई वाज, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 मिनट बोला ओके नेक्स्ट स्टूडेंट चेंज कर दो, ठीक है, तुमने इसको पता है। तो अगर आपको पता है तो वो एकदम चेंज कर देंगे, वो क्यों ना टाइम वेस्ट करेंगे। तो जो भी आप बोलोगे उसी से काउंटर क्वेश्चंस होगा। तो आपकी जीके और बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेशनल मिलिट्री नॉलेज आपको पूरी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फील्ड फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे आर्मी वर्क करती है, जो भी आप रेजिमेंट में जा रहे हो उसकी पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्या आर्म्स वेपन्स यूज होते हैं। तो अगर आप अच्छे आंसर्स देते रहोगे उनको ना, ऐसा नहीं सारे, अगर कुछ आंसर्स आपको नहीं पता तो डायरेक्ट कह दो सर सॉरी आई डोंट नो, बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद घबराना नहीं है कि अच्छा मैंने दिया नहीं, क्योंकि आपके 4-5 आंसर से आपका डिफाइन नहीं होगा सिलेक्शन, बट एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट इनफ कि आपने बोल दिया। देन ऑल्सो जैसे सर के मैं कुछ मुझे सर मेजर सर सर कहते, देन ऑल्सो ट्राई, मैंने कहा सर आई डोंट वांट टू ब्लफ, डायरेक्ट बिफोर टू बी ऑनेस्ट, ओके ओके। सो इट इज दैट, बी ऑनेस्ट, नहीं आता नहीं आता, पागल मत बनाने की कोशिश करो कि इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम अस, तो कि हाँ मैं इतना आंसर दे दूंगा तो वो समझ जाएंगे, तो फड़ के बैठते हैं। तो नहीं आता तो स्टेट ओवर से सॉरी सर आई डोंट नो। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। सो जैसे कि मैंने जिस कोचिंग ली थी नोएडा में, तो वहाँ पर एक बुकलेट जितने भी टॉपिक्स थे हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कम से कम अराउंड 100 से टॉपिक्स हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की, और आर्मी के बारे में बहुत सी चीजें हैं ना। सो इफ राइट। दोज थिंग्स यू एबल, देन नथिंग विल कम आउट ऑफ दैट। सो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो एज यू हैव टोल्ड मेनी टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जो आपको बुकलेट में थे क्वेश्चंस, है ना? तो अभी इफ आई टॉक अबाउट ऐसे क्वेश्चंस जो हमें, आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली आंसर ही नहीं कर पाए, सो किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो जहाँ पे यू गॉट स्टक कंप्लीटली? Actually, it's a wild time. I got recommended on 3rd of July. So I'm not able to recall, हम्म। but there were some questions I was not able to recall. I'm so sorry, sir. I don't know. So I'm not able to ओके, recall because it's 2-3 months after. I don't want to bluff, I नो must नो, say. इट्स ओके, इट्स ओके। Right. Okay. If I talk about sports, है ना, many people think that if they have not achieved a certain level in sports, they should not mention it. या फिर अगर उन्होंने नेशनल तक नहीं किया तो उन्हें पीआईक्यू में नहीं मेंशन करना चाहिए, या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी इवन दे डोंट टेल। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? जरूरी है कोई लेवल अचीव करना हर स्पोर्ट्स में जो हम मेंशन No, no, करते I had achieved no achievement, major achievements. I had mentioned volleyball, badminton, and kabaddi. हैं? That is at school, college, school, and one kabaddi is other outside. So I had not achieved any. So I used to say, sir, I like to play this game, but I had not achieved anything in these games. I like to because when I was free, I used to love to play these games, but not at any high level or at a tournament, anything. Only this thing, ओके। but we should mention what it is not that you should have achieved something in that thing. So what is we should mention if we are playing any we like we love to play that sport, and we should हम्म। mention a sport in which a teamwork is more, like volleyball and kabaddi instead of like badminton single. I love play that I mentioned, but you should focus on a team sports that is more helpful irrespective of a single like tennis or chess. So it is good. You should mention it all, but you should mention a team sport also. राइट। ओके। सो लाइक योर इंटरव्यू वेंट फॉर सो लॉन्ग, वाजंट यू एग्जॉस्टेड इन बिटवीन कि यार ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हाउ डिड यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड एट दैट टाइम? No, no, he was too good, and I think I was very happy, and I didn't, and I came to know that when this time passed away, was the time passed because time he was continuously asking, I was answering, and this is how too much many good person related to my life things and many things that I didn't never came to know that time passed because he was not making me demotivated or something getting angry. No, he was very positive and पोलाइट पर्सन आई मस्ट से, पता ही नहीं चला टाइम कैसे हो गया, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट नेक्स्ट वो चीज अच्छी अच्छी लाए जा रहे थे, वो रिपीट नहीं कर रहे थे रिलेटेड टू। और मेनी टाइम्स ही आस्क्ड व्हाट यू व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, और इसका आंसर सबका अलग अलग हुआ। बी राइट। ऑनेस्ट जो है, मैंने नहीं दिया सर मुझे ना वो वो है प्यार है आर्मी से, पैशन है नो। मैंने उनको पूरी हिस्ट्री बताई कि कैसे व्हाई आई डोंट वांट, व्हाई आई वांट टू जॉइन आर्मी। तो सर I said sir I am earning very well in my life, and if not army then I will strive for the territorial army when my attempts will be over, but I will be part of the army because my father was Sainik School tutorial, my grandfather was in the army. So my grandfather passed away when my father was in the 10th standard, he had left his school, and it was dream of my father also. Then when I used to go in the get-togethers of my father with his army friends,
So they are used to see the army culture, how they love each other and respect each other. You got the chance that in a PIQ, I love traveling. Interest are my talent, but I love traveling also. I mentioned I love traveling. I love interacting with many people. And my second thing is that sir, the respect thing, which is then a common layman is also respects even a soldiers a lot as compared to an IS officer. Because for that illiterate person, he thinks for IS officer ये तो पैसे खाता होगा, ये तो ऐसा है. बट एक सोल्जर्स के लिए उसके दिल से रिस्पेक्ट आती है. इन माई स्टेट बहुत प्यार है हर किसी को है, चाहे वो सोल्जर्स हो, ऑफिसर्स में, चाहे सोल्जर्स हो सर. एवरी पर्सन लव, और वो अलग ही पूरी सोसाइटी में है सर, उसका ऑरा ही अलग है. इवन मेरी फैमिली का स्टेट है, सब रिस्पेक्ट एकदम वे चेंज हो जाएगा. मेरा मेरा ड्रीम है सर, एंड आई कीप ऑन ट्राइंग. सो दिस वाज माय आंसर्स. For not for money, I know money is there, but I can earn with my communication skills. I can very well. But sir, I am a non-materialist person, and that army officer, जितने भी army personals होते हैं, वो इतना कुछ करते हैं, वो इवन common person को पता भी नहीं होता कि वो क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, because they are not aware enough. तो वो कहते हैं if you will get the chance to become IAS officer offer, you will become. Sir, I will not. I don't want to, because sir, I don't want power or fame. I want respect. Because yes, he having the power in everything, IAS officer, but he don't have that much of respect that an army personnel have, and that I used to get goosebumps when I used to see the army pictures and all that. This respect, sir, I love it. Otherwise, I am happy with my private sector. I don't want to come in government sector and all. I'm doing well in my life. I will continue doing well for that sector only. Only in army. Other if not my tension over, I will try with TA. For 2 months, I know 2 I will get clear, and for 2 months, less I will do. So that okay. Then again, then he didn't ask me. Okay, so that shows the clarity you had at that time, right? Okay. Okay, so as you are from Bikaner, Rajasthan, right? A very rich heritage city, particularly. So, what questions were asked from your place, particularly? He asked me, okay, tell me about Bikaner, something he had been posted to the Bikaner. So I started, sir, Bikaner is a very good and peace city. People are very hospitable and loves each other. And we are famous for Bhujia Papad Rasgulla. He started laughing because it is famous thing about Bhujia, internationally famous Bhujia Papad. And it was and also sir Kandi temple of the Rat temple, internationally famous Rat temple, and for its heritage, foods, it is famous. Every people love each other here, and irrespective of caste, culture, and all. And people are very down to earth and simple, because it's a very this is how I answered my answer. And real this is whatever the things is there, I answered that only. I started like with I add with my GK also that it is the fourth largest district of India and second largest district of Rajasthan. Then I started about the qualities of Bikaner, some international places, about the people also. This is how I completed. So, you You must. thoroughly covered that topic, right? Yes. Okay, so now as you have already told me about your GTO, ठीक है, आप बस मुझे ये बताओ कि when there are GD topics है ना, there are 3 different leads which are given for the topic, and generally people have this misconception कि आपने एक lead ले ली है तो आप उसको switch नहीं कर सकते हो. So what is your say over that? आई मस्ट से यस, जैसे कि आप जो भी ले रहे हो, आप जो भी ले रहे हो, तो आपने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा. तो और जीडी में ऐसा नहीं कि किसी को हराना है. इवन जीटीओ भी ब्रीफ करते हैं, ये एक फ्रेंडली डिस्कशन है Right. है ना. कोई ऐसा नहीं कि इसको नीचा दिखाना है और आपको प्रूव करना है सही. तो हम बात कर लेते हैं. अगर किसी के और टॉपिक से तो इसे आया वैसे यू आर आई पार्शियली एग्री विद यू. This thing is also there, but like this thing is also connected with my thing, what I am saying, na? Like leadership, like the recent video that if India is gaining popularity and so beginning all over the world, what is the reason? Recent topic of why I got. Yeah. So it was because of good leadership, moral values, or geopolitical, because of geopolitical importance. So I took the leadership. So because of leadership only, you were able to lead good, and so when you, if you lead, if your result is whatever we also know about the present government because of the strong decisions, how much it is changed. Yeah, moral value, geopolitical already, but what is the use of geopolitical position when we don't have a good leaders? Because it was same for the last decades. We can't change. Right. So because of good leadership only, we get fame. So all yes, right. So some of the other some of the boys used to, if someone said this moral and someone said then they used to counter and make them down. So never used to do make anyone down. We should give points for our what you have taught in 5, 7 to 8 days enough. Once you have said, then please be quiet and give others also chance. Let 4, 5 had done.
देन अगेन गिव अ पॉइंट. इट इज नॉट कि मुझे ही बोलना है और इसको नहीं, और इसने कुछ बोल दिया तो उसको काट दिया. तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर आप एक ग्रुप पर्सन तो हो ही नहीं ना. आप किसी को, ये आर्मी में ग्रुप पर्सन चाहिए जो हर किसी को आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, ना कि किसी को नीचा दिखाए. तो ये चीज राइट. याद रखो कि वहां पर एसएसबी में कंपटीशन नहीं होता. वहां पर ये होता है, अगर ऑल आर गुड और हेल्पिंग तो सबका हो सकता है. अगर नहीं है तो वो पता नहीं क्यों होता है कि अरे यार मेरे को, मैंने जो बोला है वो सही है. तो आई यूज टू, some people in my one of the times, one of the abusive word also they can use while narration, and I used to get shocked. I don't know why they're coming for Rome, and while individual obstacles they are using, when they used to jump, abusing words is coming outside. In heated arguments they used to say abusive words. I don't know how come they come, but please don't do this. Please give time to each and everyone, and in a peace and calm manner, in a friendly posture and body language. So it is one of the best thing. If one, yeah, I must say the topic which you have selected, like leadership. So give points for that. If someone is saying, yeah, you can say, I partially agree with you. अगर आप नहीं एग्री हो तो राइट. बी क्वाइट ना, बट उसको डिमीन मत करो, जो उसने बोल दिया उसको काटो मत. सो दिस इज माय थिंकिंग. Okay, basically put your point and support others as well. यस यस. Right. Okay, so you have already covered your conference part, है ना? It was very much clear as it was not that long this time. यस यस. Right. Okay, so after conference है ना, अभी recommendation हो गया, उसके बाद क्या होता है यार एसएसबी सेंटर्स में? उसके बाद आपके ऑफिसर्स आते हैं. आई थिंक समटाइम्स दे यूज्ड टू कॉल इन द ऑफिस, और हमारे तो खुद ही बाहर आ गए थे, कंग्रेचुलेट अस, द टू ऑफ अस. तो फिर वी कैन थैंक यू, एंड फिर वो हमारे डॉक्यूमेंट्स, वो खूब सारे फॉर्म दे देते हैं आपको, है ना. वो फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं हाथों हाथ, नहीं 1-2 आवर्स के अंदर. फिर वहां आप जाने के बाद जहाँ पर आपको नया अकोमोडेशन चेंज करना होता है, वहां चले जाते हो. फिर कॉल अप ऑफिस में फिर आपको वो फॉर्म्स देते हैं बहुत सारे, वो आपको भरने होते हैं. देन मेडिकल स्टार्ट हो जाता है. देन मेडिकल्स में फिर आपको फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्म्स फॉर्म्स फॉर्म्स. सो वो हो, बट गुस्सा तो बहुत आता है, बट क्या आता है यार, वी आर लकी इनफ कि गॉड ने हमारे को, बच्चे मरते हैं इन फॉर्म्स को भरने के लिए. पहले बता दे क्या है, क्योंकि 4-5 सेम फॉर्म भरने होते हैं, 6-7. So it stuck with me, but it was good. The forms here, I must say nothing much. They used to suggestion कि no ज़्यादा social media होते हैं. Only these things they used to do. Otherwise, nothing much different. Only congratulations, and then you have to fill form, and your medical starts from the next. Okay, so how was your medicals and what suggestions you want to give for those whose medicals are going to be happen in the upcoming times? Yes, I must say if you are suffering from any problem, so please clear it before going to SSC. Because we never know when we can get recommend or not, because it is depend on the time also, the luck also ना. तो वी नेवर नो, कि हम सोचते हैं एक बार सिलेक्शन होंगे फिर देखेंगे. प्लीज नो, क्योंकि सम कुछ टीआरस ऐसे होते हैं कि जिसमें ना अगर उनको पता चल जाते हैं तो फिर वो रिजेक्शन के पॉइंट होते हैं. सो प्लीज अगर आपको पहले से चीजें पता है तो वो क्लियर करके ही जाओ. अदरवाइज फिर आपको बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज आप एक बहुत जर्नी क्लियर करते हो, आपको पता नहीं नेक्स्ट टाइम Right. रिकमेंड होगे भी या नहीं. तो Mm-hmm. इट इज बेटर कि आप उसको क्लियर करके जाओ, और ज्यादा टेंशन नहीं होना. नॉर्मल बेसिक होता है. और इट वाज दैट कि जब भी आप मेडिकल्स में जाओ, सबका अपना अपना, आई यूज्ड टू, बिकॉज दे आर आल्सो इक्विवेलेंट डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं. तो आप प्लीज ड्रेस थोड़ा फॉर्मल्स में होके जाओगे तो ज्यादा ही बेटर रहता है, अच्छा रहता है. सबका अपना है, सब कहीं नॉर्मल्स में भी जाते हैं तो सबका, नो वन टू से एनीथिंग करेगा. बट आई यूज्ड टू गो इन फॉर्मल्स बिकॉज दे आर इक्विवेलेंटली इक्वल रैंक्स एंड डॉक्टर्स दे आर. तो आई मस्ट से, और ऐसा कुछ मेडिकल्स में डिफरेंट नहीं होता. तो बी कॉन्फिडेंट, मेडिकल्स होता है लाइक भोपाल में, तो माई मेडिकल्स कंप्लीटेड इन 3 days ओनली. And like Okay. because our ICO sir was very good. Mm-hmm. He was very young, of our age only, and he was taking stress to complete. अच्छा ये हो गया फटाफट वो करवा रहे थे सबका. He was very helpful person. तो 3 दिन में ही उन्होंने मेडिकल्स करा दिया हमारा. बिकॉज Okay. अमूमन आपके 7-8 दिन, और अगर इलाहाबाद जैसे हो जहाँ पर इतने सारे सेंटर बोर्ड हैं, वहाँ बच्चे बहुत होते हैं, तो आप 15 दिन तो मान के चलो, क्योंकि उसमें छुट्टियां भी आती हैं, ये भी होता है. इट इज दैट मेडिकल्स में तो भोपाल वॉज वेरी, बिकॉज वहाँ बच्चे बहुत कम रिकमेंड होते हैं, Right. तो आपका बहुत जल्दी हो जाता है. सो Mm-hmm. इट इज, और एनसीओ सर इज वेरी वेरी गुड, कौशल सर इज वेरी गुड पर्सन. Okay. सो अभी एक और मेरे को डाउट है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि दे आर नॉट स्पीकिंग गुड इन इंग्लिश, है ना, देयर यस इज यस. नो चांस ऑफ देम गेटिंग रिकमेंडेड. तो आपको क्या लगता है कि इज इंग्लिश मैटर्स और जस्ट द कम्युनिकेशन? एक्चुअली कम्युनिकेशन मैटर्स, बट समवेयर इट इज नॉट से, आई मस्ट से कि आपको पूरा अंग्रेजी बनना है, एसेंट लाना है. इतनी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ. एकदम ही नहीं आनी, वो तो आपके फिर अगेंस्ट जाएगा ना.
बट इतनी आनी चाहिए, इतनी लेवल की, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ इन ग्रामेटिकल यूज कर रहे हो, दैट इज डजंट मैटर कि आप ग्रामेटिकल इंग्लिश सही बोल रहे हो, बट आपकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको होगा ही नहीं। बहुत से एक दो फ्रेंड्स हैं शायद तक उनको नहीं आती थी बट उनका हुआ, बट उनकी इतनी पुअर नहीं थी कि बिल्कुल ही ना बोल पाए। प्लीज ट्राई। और ऐसा इंग्लिश का कोई ऐसा इतना रोल नहीं है, बट यस इंग्लिश प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही इंग्लिश है। तो अगर कोई भी आपको फ्रेंड फ्रेंड हो उसके साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो तो आपकी फ्लुएंसी आने लग जाएगी, तो दैट फिर आप अपने आप को ऐसे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, सो कि सामने वाला समझ पाए। पर राइट। उससे लेवल की आनी चाहिए, बाकी ऐसा कुछ हाई लेवल के वोकैब यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती कि हाई लेवल वोकैब यूज करनी है हमें, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। So as you have such a good English and your communication is very good, so can you tell me how did you prepared for that? Yes, yes. Actually, I must say my father played an important role. He was Chinese school tutorial, and I think from his time from in my colony and everything, my relatives, he has very good English. So in my childhood, when I was in second, third standard, because Bikaner is a small city, so Right. there English is not that much. My school was good, but in my schooling also about 80 to 90% students can able to get what they some person is speaking, but they can't spoke because why? Because we need someone with. So my father used to talk with me, and he used to take me to the foreigners on the stations and everywhere, and they start to like talk with him. So from there, I used to get confidence. So from starting, so where are you from? What is your name? From there, from less from bottom to top, this is how our confidence builds, and we'll start speaking. So it becomes habitual. The more we speak, the more we will improve. Once Right. for the first time we will do the mistakes of had and have, he and she. Once the mistakes one had done, next time we will not repeat that. In subconscious mind we don't repeat. But when we not speak and sit idly, na yaar aati nahi, to kabhi bhi nahi aayegi. So what that my father plays an important role, and my school also, I must say. In my school I used to listen but not that much I used to speak, but my father's plays an important role for, I must say. So basically, he already had a big vision for you from the long back. Right. Yes, yes, definitely. Yeah. So again, many congratulations that you have cleared it, right? Finally. Thank you so So much. can you tell me or give some suggestions to our viewers or the candidates who are going to appear for their first SSBs or being the repeaters also, as you are the person who have seen all the three stages of SSB, Yes, yes, right? yes, Being the screen out, being the recommended, and being the conference out as well. So what is yes, yes. your suggestion for the like masses? आई मस्ट से प्लीज बी ऑनेस्ट, एंड जो आपकी पर्सनैलिटी है ना वहीं पर आप वही दिखाओ, किसी के सजेशन में मत आओ कि किसी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पहली बात तो किसी रिकमेंडेड की आपको सजेशन लेना भी नहीं चाहिए, आई मस्ट से, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर। जो मेरी लाइफ है अलग है, मैंने अलग चीज अचीव की, आपने अलग की है। आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, सम इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स आर इक्वली गुड, बट अगर एक इंटरव्यू एक्सट्रोवर्ट्स के आंसर देगा तो वो उसकी वेरिएशन आएगा पर्सनैलिटी में। तो अगर आप साइक में लिख रहे हो हाई फाई लेवल की ना, हाई फाई लेवल की स्टोरीज लिख रहे हो ना, स्कीम में डाल रहे हो और ये वो, और इंटरव्यू में आप एकदम एवरेज आ रहे हो, और जीटीओ में आपके बॉडी जेस्चर्स और एकदम ही अलग आ रहे हैं, चुप चुप, तो आप एकदम ही अलग आ रहे हो ना, तो आप रिकमेंड नहीं होगे, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं हो जो आप शो कर रहे हो। बट आप साइक में भी एवरेज स्टोरीज लिख रहे हो, आप इंटरव्यू के अंदर भी आप एक एवरेज पर्सन हो, आप जीटीओ के अंदर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज एक एवरेज है, हेल्पिंग। तो अगर आप एवरेज भी हो तो ये चीज आपको 100% रिकमेंड करेगी। एंड वन ऑफ द एसएसएस इन वन ऑफ माय अटेम्प्ट इवन ब्रीफ अस एंड गिव अस दिस बेसिक इंसाइट, बिकॉज़ सम ऑफ अस आंसर आप लोग देखते गए, तो उन्होंने बहुत टाइम लेके समझाया कि अगर आप तीनों एसएसएस में एवरेज एवरेज आ रहे हो तो आपको हम सिलेक्ट करेंगे। बट आप एक ऐसे एसएसआर आपको एक्सीलेंट बता रहा है, एक आपको एवरेज बता रहा है, एक आपको गुड, तो वहाँ पे डाउट आ गया, तो हम डाउट केस को नहीं लेंगे। तो आप ऑनेस्ट रहो और जो हो वो ही शो करो, तो वो बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप में है तो आर्मी के लायक अगर आप वो हो, चाहे आप एवरेज हो कुछ भी हो, चाहे वो सर कहते थे अगर हमें 90% वाला नहीं चाहिए, आईआईटी नहीं चाहिए, 50% वाला भी चलेगा, बट वो ऑनेस्ट रहना चाहिए, उसके रीजंस को भी ऑनेस्ट होना चाहिए, क्यों है, वैलिड रीजंस होने चाहिए वाई, तो हम उसको लेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं, हमें अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा टीम पर्सन चाहिए जिसको अकेला रहना पसंद ना हो सकती, मतलब अच्छा हो, पॉजिटिव पर्सन हो, जो दूसरों को बुरा ना सोचता हो, दूसरों के साथ। तो सर ने कहा ऐसा पर्सन भी नीड, ऐसे नहीं कि आप फेक दिखा रहे हो, साइक में अलग दिखा रहे हो, इंटरव्यू में अलग दिखा रहे हो, जीटीओ में अलग दिखा रहे हो, और अगर आप ऐसा दिखाओगे तो इस कारण से हम लैक होते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। और कई सोचते हैं कि भाई हम डोमिनेट करने से अच्छा होता है, Right. आई डोंट थिंक सो। डोमिनेट से तो आपके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अगर यस, अगर आप जीटीओ में डोमिनेट कर रहे हो
और आप आपके साइक में भी लग रहा है, यस यू आर अ वेरी डोमिनेट, मतलब लाइक अ लीडर, बिकॉज ऑफ नॉट द डोमिनेट वर्ड इज राइट, बट सबका होता है, अपना बिहेवियर होता है, बट आप इंटरव्यू में वैसे आ रहे हो और साइक में जा रहे हो। तो मैंने उन लड़कों को भी देखा है, जैसे अदर ग्रुप में जो वो सारा ग्रुप होता था यार बहुत डोमिनेट करता था, पर वो सिलेक्ट रिकमेंड होते हैं बिकॉज आई थिंक वो तीनों में आ रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तो उनको लिया जाएगा। अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, उसका थोड़ा एक्सप्रेसिंग और वे वैसा है, तो उसको लिया जाएगा, बिकॉज दैट थिंग आई थिंक कैन बी इम्प्रूव इन द अकेडमी और एनीवे, तो उसको लिया जाएगा बिकॉज ही इज व्हाट ही इज, वैसे फेक नहीं बन रहा। तो अगर आप सिंपल शांत पर्सन हो, आप जीटीए में भी वैसे आ रहे हो, इंटरव्यू के सामने वैसे आ रहे हो, जॉली पर्सन हो, जॉयफुल, और आपके साइड में भी वैसा आ रहा है, तो अभी आपको लिया जाएगा। बट आप तीनों में अलग अलग आ रहे हो, तो वो और प्लीज ऑनेस्ट रहना चाहिए, कभी फालतू चीजें झूठ मत बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो आप कभी नहीं होगे। और सेकंड, सच इतना बोलो कि वो सच आपके अगेंस्ट ना जा रहा हो रिकमेंडेशन के लिए। और ऐसे सच बोल दोगे सर, वो तो गुस्सा ही बहुत ज्यादा आता है यार ये, तो फिर आप जस्ट बी स्मार्ट इनफ टू बी ऑनेस्ट, otherwise please behave like what you are, then surely 100% you will get recommended and no one can stop. And be honest, I must say, that is thing, that best thing about the blessings of our parents, I must say. बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके Yes, एक्शंस, आपके स्पीच, आपके लाइक थिंकिंग में, राइट? yes, mansa vacha karma, what they say. Right. Yes, yes. Okay, so it was actually very well explained. So the last question for the day, so how did you Okay. came across or came to know about SSB crack exams, and how was it helpful in your preparation? And if you have any suggestions for us, we are very much happy for that. Yes, yes. Like I used to use Insta, and when we used being a freshers, we used to see the all the good accounts for which are helpful for the preparation. So I prepared from OIR from SSBCrack, and for the current affairs portions, there is a PDF, monthly PDF, I must say, for SSBCrack. I used to read that for improve my current to remain updated. SSBCrack, that is one of the best thing I used to take from SSB, and the news, current news which is used to come on the pages, pictures, that used to be given as active, because those things were relevant, whether it will come in the G topic or in get me asked in the interview. So आप update रहते हो, जैसे आप लोग whatever news going to come on the page, that is very helpful. So this is how SSB Tech is very helpful, और जो भी motivational pictures आते हैं, we used to get motivated from that also. So OIR and the current affairs, it is very good, and no suggestions SSB Tech is good on my side. That is why I'm sitting in front and giving interview, because I used to follow SSB Crack, and it played important role in my recommendation. I must say, helpful it was. Okay, thank you so much. And okay, a very congratulations again for you joining the academy very soon. Like I guess within 10 days you might be joining the academy. Yes. Right? Yes. So I'll wish you very happy journey for you, for a like successful journey for your life ahead. And thank you so much again for sharing such beautiful experience of your SSBs, your life. And I hope many candidates must be listening to you. If not nothing, they might be at least knowing what is the right way to go for. Right? They at Yes. least be knowing what being truthful is. Anna? Basically, you Yes. have to tell whatever you're telling should be truth, but you need not tell everything. Yes. Yes. Right. So thank you so much for giving such good lessons, and a very happy journey, and again a very happy life to you too. Thank you so much and have a great Thank day. you so Bye much. bye. Thank you so much.